वी विल स्टार्ट द क्लास नाउ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा क्लास है नहीं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है डीजीएमएस के लास्ट ईयर के, दैट वी शैल सॉल्व, और एक दो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। So this is the second class of first aid. You already know that. So the first topic for today is electrical shock. Okay, electrical shock. इसके ऊपर भी DGMS ने क्वेश्चन पूछा है। So electrical shock के बारे में पढ़ते हैं। What is electrical shock? So electrical shock, simple meaning is that when some person is caught with electric current, या कहीं पे करंट लग गया, लाइव वायर को कुछ किसी ने टच कर लिया, गलती से टच हो गया, या इलेक्ट्रिशियन है वो लोग कुछ काम कर रहे थे और गलती से कुछ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो उस तरह के जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो आपका एक्सीडेंट होता है, खासकर इलेक्ट्रिकल शॉक की हम बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट एड कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द सिचुएशन, क्या हुआ है पहले ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या है ना। उसके बाद तुरंत आपको एक्ट करना है, एक्ट क्विकली, एंड देन सेकेंड्स काउंट। सेकेंड्स काउंट मींस व्हाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ है तो बहुत जल्दी आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इन सर्वे वी हैव स्टडीड अबाउट ड्रैप्स, राइट? सो दैट इज रिटन हियर। डेंजर, चेक फॉर द डेंजर, क्या डेंजर आया है, रिस्पॉन्स क्या करना पड़ेगा, सेंड फॉर हेल्प। तो ये वही सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ा है, कुछ भी अलग नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। airway, you know that airway, then you have to clear the breathing, if needed you have to conduct the CPR, or if cardiac arrest is there then you may have to use defibrillation also. Okay, so these all terms we have already studied, so that is not much, कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट इसमें भी नहीं है। what is the requirement that I have already written, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, एन इलेक्ट्रिकल शॉक में विल काउज कार्डियक अरेस्ट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर द इलेक्ट्रिकल शॉक देयर मे बी कार्डियक अरेस्ट, so prepared to perform CPR. You already know that in case of heart attack or cardiac arrest, CPR has to perform and AED may be used. Okay, ensure that it is safe to approach and help the casualty. आपको पहले ही बताया था, this is the golden rule. I have already told you that in first aid you have always you always have to take care that you should not put yourself in danger. सबसे प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी फर्स्ट एड के लिए? टू सेव लाइव्स। इसलिए एक्स्ट्रा लाइफ को सेव करना है, ना कि एक्स्ट्रा लाइफ को क्या करना है, इन डेंजर करना है, राइट? सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर सेफ बिफोर हेल्पिंग एनी विक्टिम और कैजुअलिटी। Make sure the contact between the casualty and the electrical current is broken. तो ये तो पहला काम आपको करना पड़ेगा। If some person has been caught by electrical shock, he is lying on the ground. You first have to ensure कि electrical current का जो आपका source है वो broke हुआ है कि नहीं हुआ है. If that is not broken and suppose you touch the casualty, then you will be also caught in the electrical shock. That is why you have to ensure that there is no connection between the electrical current and the person or the casualty, right? Because you have to save yourself. Make sure to maintain the casualty's airway and breathing. Already know that कि अगर वो सांस लेगा, जिंदा रहेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। Try to irrigate the area of burn. Area of burn पे irrigate करने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा आपको कोई फ्लूइड से, हो सकता है वाटर से, आपको उसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, including the area between the entry and exit burn for at least 10 minutes. जहां पे भी बर्न हुआ है, सपोज मान लीजिए कि आदमी ठीक है, सांस ले रहा है और किसी तरह कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, बट दिख रहा है कि उसका कहीं हाथ जल गया या कुछ पैर जल गया, स्किन जल गया, तो मेजर वहां पे फर्स्ट एड किस चीज का होगा? स्किन का जो बर्न हुआ है उसके ऊपर। स्किन बर्न के बारे में अभी हमने स्लाइड में पढ़ा है आगे। डायल 112, आपको पता है, एक्सटर्नल हेल्प। यू ऑलवेज नीड एक्सटर्नल हेल्प। व्हाई? बिकॉज you have to increase the manpower to help that person. Okay, so these things we have already studied, कुछ भी नया नहीं है इसमें। Now this is the question. Read the question and try to answer it. When a person received an electrical shock, the first thing to do is, these are the options: cover all burns with a dry loose dressing, call the ambulance, place the victim on one side with the head down, make sure the power is turned off, ask a bystander to help you move the victim. Okay,
So this is the question. You have to answer it. This question has been asked by DGMS. Okay. So most of you people are answering D, which is the correct answer, because I have already told you that in case of electrical shock, you have to ensure that there is no connection between the victim and the electrical current. Okay, that connection is broken. So that is after the power is turned off or switched off. Correct. Let's move on. There's one more topic called fainting. Fainting मतलब बेहोश हो जाना. Fainting मतलब बेहोश हो जाना, unconscious हो जाना. So fainting is caused by poor nervous control of blood vessel and the heart. तो fainting basically किसके कारण होता है? Nervous system के कारण होता है. Fainting mainly occurs due to system failure, blood vessel and the heart. ये बहुत ही common सी आपको पता है. This is very common disease. So what are the causes of fainting? Fright और pain. कहीं पे बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के पेन हो रहा है, पर्सन में फेंट. एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी सच एज स्टैंडिंग और सिटिंग. बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय के लिए अगर खड़ा कर देना पड़े, मे बी वो फेंट हो जाए. लैक ऑफ फूड इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ फेंटिंग. दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. फेंट हो जाना जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. इमोशनल स्ट्रेस इज देयर, हीट एग्जॉशन इज देयर. These are the causes of बेहोश हो जाना. बहुत बार होता है, बहुत बार आप डर के कारण लोग बेहोश हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर द रीजंस, दीज आर द काउजेस ऑफ फेंटिंग. ट्रीटमेंट क्या होता है? अब फेंटिंग चूंकि बीमारी भी कॉमन है, तो ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन है. इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फेंटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, ले द कैजुअलिटी ऑन अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे उसे सुला दीजिए. Preferably the floor. I have already told you that always try to lay the casualty on hard floor. ठीक है ना? कभी भी सॉफ्ट फ्लोर नहीं होना चाहिए या अनइवन फ्लोर नहीं होना चाहिए. फ्लैट होना चाहिए एंड हार्ड होना चाहिए. So lay the casualty on the flat surface, preferably the floor, and raise their legs, which will return the blood to the vital organs and raise blood pressure. Okay, so this is important. In case of fainting, आपने जब उसको सुला दिया, when you have made the casualty lay on the floor, then lay his legs, मतलब उसके पैर को ऊपर कर देना. पैर को ऊपर कर देना. पैर को ऊपर करने से क्या होगा ना कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ. ठीक है ना? वाइटल ऑर्गन्स आपको पता है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में है. हार्ट ऊपर है. इसके अलावा सारी चीजें जो है, ब्रेन आपका ऊपर साइड में है. सो लेग को आपको ऊपर कर देना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ हो और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है लेग को ऊपर करने के लिए. राइट. चेक द कैजुअलिटीज एयरवे एंड ब्रीथिंग. यू ऑलरेडी नो दैट. आपको पता है कि जिंदा है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा. ट्राई टू रिमूव द काउज ऑफ स्ट्रेस सच एज पीपल क्राउडिंग द कैजुअलिटी एंड अलाउ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. ये आपको पता ही है. कभी भी कहीं पे भी फर्स्ट एड हो रहा हो, घेर करके सबको खड़ा नहीं होना है. देयर शुड बी सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर. दैट इज रिटन देयर. Reassure the casualty as they come on. Try to stop them from sitting up suddenly. Right? जब एक बार होश में आ जाए तो उसको थोड़ा आराम करने देना है. ऐसा नहीं कि तुरंत खड़ा हो जाए, वापस काम करने चला जाए या फोर्स करो आप काम के लिए. That is not required. If the casualty feels faint again, repeat the treatment and check for an underlying cause. अगर मान लीजिए दोबारा फेंट कर जा रहा है, इसका मतलब कोई बीमारी हो सकती है, तो उसके बारे में आपको चेक करना पड़ेगा. If the casualty does not recover in short amount of time and remain unconscious, or you are unsure, then check the airway and breathing again. Place them in the recovery position and dial 112 for the ambulance. अगर मान लो एक बार बेहोश होने के बाद दोबारा बेहोश हो जा रहा है, या फिर बेहोश कोई है, फेंटेड है, एंड ही इज नॉट बिकमिंग कॉन्शियस, मतलब उसको होश नहीं आ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम सीरियस हो सकता है. ओके, हेल्प के लिए आपको बुलाना है. इसके अलावा आपको उसका ब्रीदिंग चेक करना है, उसका एयरवे चेक करना है, सांस ले रहा है नहीं ले रहा है. सो दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड. बट फेंटिंग इज वेरी कॉमन डिजीज. मैं कॉमन डिजीज तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे मतलब कॉमन इंसिडेंट जो कि जिसके बहुत सारे रीजन है. एंड दैट इज वाई इसका जो ट्रीटमेंट भी है, फर्स्ट एड भी जो है, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, अनलेस अंटिल देयर आर सम सीरियस डिजीजेस व्हिच इज काउजिंग फेंटिंग. कुछ और डिजीज तो नहीं है जिसके कारण फेंटिंग हो रहा है. ओके, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट. आफ्टर समवन हैज फेंटेड, व्हाट पोजीशन शुड दे बी इन टू एड रिकवरी. रिकवरी के लिए क्या करना पड़ेगा? ले फ्लैट, ले डाउन विथ लेग्स रेस्ड, sit in chair, stand upright, lay on the incline. Okay,
So that is great to see that most of you people have answered B, which is the correct answer, because I have already told you that you have to raise the legs. Correct. Just wait a minute. Which problem दिख रही है मुझे? Yes. Okay. So the next topic is fatigue. फटीग के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा ही था. फटीग मतलब एग्जॉस्शन, बहुत ज्यादा थक जाना. दैट इज कॉल्ड फटीग. सो फटीग इज फीलिंग सीवियरली ओवरटायर्ड. Most of the time fatigue can be traced to one or more of your habits or routine, particularly lack of exercise. बहुत नॉर्मल चीज है, आप बहुत बार बार थक जा रहे हैं, फटीग हो रहा है. It is also commonly related to depression. On some occasions fatigue may be symptom of other underlying conditions that require medical treatment. ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको जल्दी समझा देता हूँ. फटीग मतलब आपको बहुत ज्यादा थकावट होती है. हो सकता है कि एक तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है कोई और देयर मे बी सम अदर डिजीजेस व्हिच इज काउजिंग फटीग. ओके, सो दैट इज फटीग. फटीग मतलब सिंपल सी बात है, थक जाना, थकावट आना. व्हाट आर द रीजंस? दीस मे बी द रीजन ऑफ फटीग. थक जाना. ठीक है, फटीग इज वेरी सिंपल. थक जाना, लोग थक जा रहे हैं, काम करते करते ना थक जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है काम करने का, इस तरह की चीजें. व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फटीग? फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेटाबॉलिक. आप सही से आपका खाना वो नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और कोई लीवर डिजीज है या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है. देयर में भी इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन हो गया. कार्डियक अरेस्ट एंड पल्मोनरी डिजीजेस लाइक लंग रिलेटेड डिजीजेस. मेडिकेशन. ओके, मेडिकेशन मतलब क्या करना पड़ेगा? दीज आर द मेडिकेशन. सिंपल सी चीज है, थक जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा डिजीज है. अगर कोई डिजीज नहीं है बट स्टिल यू आर टायर्ड, देन यू शुड डू एक्सरसाइज. आप लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा, हेल्दी फूड लेना पड़ेगा. दीज आर द रीजंस. ओके, विटामिन डिफिशियंसी कर सकता है, स्लिप प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो ये तो बहुत ही कॉमन सा डिजीज है. अगर क्वेश्चन भी आया तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा. फटीग, बट समझना ये फटीग मींस थकावट, थक जाना, टायर्डनेस. ओके, तो अब पता है कौन डिजीज कॉमन है तो फर्स्ट एड विल बी कॉमन. ऐसा इसमें कुछ तो चाहिए नहीं. जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू कैन सी व्हाट इज द केयर एंड ट्रीटमेंट. अलाउ द कैजुअलिटी रेस्ट. भाई रेस्ट करो, एक्स्ट्रा पानी पीना है. चेक द काउज. आपको पता करना पड़ेगा कि थकावट क्यों हो रही है. ट्रीट एंड केयर अकॉर्डिंग टू द काउज. सीधी सी बात है. ओके, तो देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन दिस. फटीग में आपको पता है, फटीग हर बार जनरली, आप भी अगर आप मान लो कि बहुत लंबे समय के लिए 4 घंटा 5 घंटा अगर आप लगातार काम कर लोगे तो यू मे ऑल्सो काउज फटीग. ओके, तो ये बहुत ही कॉमन सा डिजीज नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सा इंसिडेंट है. इज नॉट अ डिजीज. राइट, दिस इज द क्वेश्चन which have been asked by DGMS. So read the question and try to answer it. ओके, क्वेश्चन को पढ़िए, जवाब दीजिए. कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. ये डीजीएमएस ने क्वेश्चन पूछा है. दिस इज द डीजीएमएस क्वेश्चन. सो इंडिकेशन ऑफ फटीग इज डिटरमिन्ड बाय हायर इनिशियल रिकवरी ऑफ pulse rate. Higher initial recovery of pulse rate. This question has been asked by DGMS, so you can remember this. Okay, wait a minute, there are some problems. Okay, let's move ahead. So this is the next question. Read the question and try to answer it. Determination of fatigue is determined by, indication of fatigue is determined by. अच्छा, ये तो हो गया आपका. Yes, this is the question. Read the question and try to answer it. After someone has fainted, what position should be? ये तो बता दिया question. Sorry, this is a repeated question. Sorry, this is a repeated question. Okay. This is the next topic. Shock. Am I audible to all? कोई response क्यों नहीं आ रहा है? Okay, okay, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है.
ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सो द नेक्स्ट थिंग इज सॉक। नेक्स्ट थिंग इज सॉक। सॉक के बारे में पढ़ते हैं। The most common causes of life-threatening shocks. There are different kind of shocks. And what are those shocks? Number one is hypovolemic shock, cardiogenic shock, and anaphylactic shock. Okay. There are three types of shocks. Hypovolemic, number one. Number two is cardiogenic. Number three is anaphylactic. 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 So what is hypovolemic shock? Hypovolemic shock occurs due to low blood volume. कब होता है ऐसा? जब एक्सटर्नल या इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, ओके, सपोज अ पर्सन हैज बीन कॉट विद सम एक्सीडेंट एंड सम एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज अकरिंग। सो इफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग इज अकरिंग, देन ब्लड वॉल्यूम इन द बॉडी विल डिक्रीज, आपको पता है, एंड दैट विल कॉज हाइपोवॉलेमिक शॉक। व्हाट इज हाइपोवॉलेमिक शॉक? नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया किसके कारण? इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग के कारण, देन हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। नंबर टू इज कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक आपको पता है, कार्डियो मींस हार्ट, सो रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, ब्लड तो वॉल्यूम है, मतलब ब्लड से कोई कोई किसी का इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुआ है, बट अगर ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, देन देयर मे बी कार्डियोजेनिक शॉक। और आपको पता भी था, पहले भी मैंने बताया था एकदम फर्स्ट क्लास में, कि अगर ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन आने लगे, प्लेक हमने पढ़ा था, फैटी सब्सटेंस जो कि ब्लड वेसल के अंदर में एक्युमुलेट हो जाता है। So if that happens, then there are chances of heart attack. So that is why it is cardiogenic shock. Cardio, जब भी word whenever you see the word cardio, that is always related with heart. Okay. So cardiogenic shock means related to obstruction in blood flow. Then number three is anaphylactic shock. Anaphylactic shock occurs due to allergy. Allergy आपको पता है, बहुत बार क्या होता है, लोगों को different चीजों से एलर्जी हो जाती है। Okay. So these are three types of shock. Hypovolemic shock, number one. Cardiogenic shock, number two. Anaphylactic shock, number three. Why it happens? It is already written that hypovolemic shock occurs due to low blood volume. Hypovolemic shock occurs due to low blood volume. Cardiogenic shock occurs due to obstruction in blood flow, and then anaphylactic shock occurs due to allergy. Okay, due to allergy. So on to the hypovolemic shock. Hypovolemic shock, these are the causes of hypovolemic shock. Okay, hypovolemic shock. Hypovolemic shock is usually caused by, आपको already बताया कि when there is a decrease in volume of blood in the body, then hypovolemic shock may happen. So there are reasons, these are the reasons: external bleeding, internal bleeding, even due to burns, even due to vomiting and diarrhea, and there are excessive sweating. So all these are reason for hypovolemic shock. Hypovolemic shock. Okay, hypovolemic shock. देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है हमने. You can see the diagram here. There are bleeding, then this people is doing vomiting and diarrhea. Okay. You can see here what are the treatment. Treatment is oral hydration and diet maintenance, IV fluid and blood transfusion. सबसे important तो blood transfusion करना पड़ेगा. What are the symptoms? Weakness, fatigue, dizziness. डायग्नोसिस, आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा. व्हाट आर द काउजेस? डिहाइड्रेशन, आपको जस्ट अभी बताया, ट्रॉमा, एक्सेसिव फ्लूइड एक्युमुलेशन बिटवीन सेल्स, मेडिकल कंडीशंस, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, सो दिस इज वेरी कॉमन, हाइपोवॉलेमिक शॉक. हाइपोवॉलेमिक शॉक, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट हाइपोवॉलेमिक शॉक अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इनसाइड द बॉडी, देन हाइपोवॉलेमिक शॉक अकर्स. Treatment of hypovolemic shock, already told you, जो just उधर बताया था आपको, try to treat the cause of the shock, क्यों हो रहा है. If there that's due to external bleeding, तो external bleeding रोकना है. Lay the casualty on the flat surface and raise their legs above the heart, chest, आपको पता है, ताकि जो vital organs है उस side में there must be blood circulation. You have to call the ambulance. Keep the casualty warm. Do not allow the casualty to drink, eat or smoke. Okay. Do not allow the casualty to drink, eat or smoke. Nil by mouth is best. मतलब माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं जाना चाहिए. If there is hypovolemic shock, माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं जाना चाहिए. Neither food, neither any liquid, and neither smoke. Okay, loosen any tight clothing such as ties and belt. This is very common in everything.
Monitor the casualty, breathing, pulse, and response. You already know, and be prepared to perform CPR if that is required. Then you have to perform the CPR also. You have to perform the CPR also. Right? Come to the next topic. And next topic is wound and bleeding. Wound and bleeding. बहुत ही छोटी छोटी चीज है, जल्दी जल्दी आपको पढ़ाता हूँ. वुंड एंड ब्लीडिंग आपको पता है, देखो इधर डायग्राम भी बन रखा है, तो डायग्राम के थ्रू भी आप बहुत आराम से उसको समझ पाएंगे. So wound and bleeding. We are studying about wound and bleeding. Number one is contusion. Number one is contusion. Contusion is a bruise. Bruise कहने का मतलब देखो कभी कभार क्या होता है ना कि शरीर की स्किन के ऊपर कुछ चीज आपके बगल से निकल गया और स्किन जो हो गया ब्लू पड़ गया. So that is called contusion. That is called contusion. And bruise का मतलब वही होता है कि स्किन के ऊपर ब्लू हो जाना, नीला हो जाना. आपने देखा होगा बहुत बार कुछ दब जाता है स्किन से, मतलब किसी चीज से आपका फिंगर दब गया, तो बहुत बार देखते हो दरवाजे के पीछे फिंगर दब जाता है तो ब्लू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड कंट्यूजन. दैट इज कॉल्ड कंट्यूजन. सो कंट्यूजन आर काउज्ड बाय रप्चर्ड कैपिलरी. व्हाई इट हैपेंस? रप्चर्ड कैपिलरी, जो ब्लड कैपिलरीज है, दैट इज रप्चर्ड. रप्चर्ड मतलब टूट जाना, तो थोड़ा डैमेज हो जाना. ब्लीडिंग अंडर द स्किन. टिपिकली दीज आर काउज्ड बाय अ ब्लो और बाय ब्लीड caused by underlying problems such as fracture. फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया या हाथ दब गया, इस कारण से क्या होता है आपका कंट्यूजन हो जाता है. कंट्यूजन मतलब बहुत ही सिंपल सा डिजीज नहीं, हाथ के ऊपर मान लो कुछ 2-3 लाइन खिंच गई और ब्लू हो गया या हाथ दब गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रूज. ट्रीटमेंट आपको पता है, सब लोग घर में इसको इस चीज को एवरीवन uses in their home. Put an ice pack on the affected area or place the area under cold running water as soon as possible. Okay, that is a simple treatment. हाथ में मान लो कुछ दब गया, ब्लू पड़ गया, कोई भी फिंगर, कोई भी स्किन का, तो देन what you have to do, you have to use the ice pack. You have to use ice pack or you have to use the cold running water. ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कंट्यूजन के केस में. व्हाट इज एब्रेजन? एब्रेजन इज अ ग्रेज. यू कैन सी द इमेज हियर. देखो इस तरह बहुत बार आप देखते हो कि प्रॉब्लम हो जाता है, किसी चीज से रगड़, आपका योर स्किन रब्स अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज के अगेंस्ट में आपका स्किन मान लो कर गया, कोई मान लो आपका स्टील का वायर है या इस तरह कोई चीज बनी हुई है, आपको दिखता होगा, बहुत ही कॉमन है, दिखता होगा बार बार, बहुत बार लोगों को हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एब्रेजन. दिस इज कॉल्ड एब्रेजन. इज अ रिजल्ट ऑफ टॉप लेयर. इसमें क्या हुआ, टॉप लेयर ऑफ स्किन बीइंग स्क्रैप्ड ऑफ. जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है ना, वो क्या होता है, हट जाता है. यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग फॉल और ए फ्रिक्शन बर्न के केस में भी हो सकता है. Abrasion can often contain particles of dust which could lead to infection. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें abrasion में यही है, जब ऐसा कभी भी कुछ भी होता है ना स्किन के ऊपर, the major जो सबसे बड़ा डेंजर होता है वो होता है डस्ट पार्टिकल का घुस जाना. इन सारे पार्ट में ना डस्ट पार्टिकल्स का अंदर चला जाना. ओके, सो दैट इज व्हाई abrasion can often contain particle of dirt या dust which could lead to infection. Why that is dangerous? क्योंकि उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है. इन्फेक्शन होने के बाद चीजें और बढ़ सकती है. So what is the treatment? Any dirt that is not embedded in the graze should be removed with clean water. इसलिए clean water को use करना है. And sterile swabs always clean from the center of the wound outward to reduce the risk of introducing more dirt into the wound. इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सेंटर से थोड़ा थोड़ा दूर जाकर के क्लीन करना है. एम क्या है? The aim is that dirt should be removed. Dirt should be removed. And not more dirt should enter the skin. Why? Because dirt can cause infection. That can cause infection. ठीक है, तो बहुत ही कॉमन चीज है, हमेशा याद रखना है. कंट्यूजन, अभी तक हमने दो चीजें, we have studied two things here. Contusion number 1, abrasion number 2. What is the solution for both? Tap running water, cold running water, या फिर आपका ice pack, जो उसको थोड़ा ठंडा करे, dirt को remove करे. So that is the solution. Okay, this is the number 3, and this is called laceration. Laceration is rip or tear in the skin. आपको डायग्राम में देखो दिख रहा होगा क्या हो गया. देखो यहाँ पे जो है ना, आपका स्किन टीयर हो गया, कट गया पूरा, दिखेगा आपको कि दोनों स्किन का पार्ट अलग हो गया. राइट? सो laceration is a rip or tear in the skin. These are more likely to have particles of dirt than a cut, tend to bleed less. इसमें क्या होता है कि ये ब्लीड कम करता है, बट इसमें डर्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाता है. ओके, तो treat the bleed and prevent infection. आपको पता ही है कि डर्ट पार्टिकल अगर रहेगा तो डर्ट पार्टिकल से इन्फेक्शन हो जाएगा. तो किसी भी वुंड में, कोई भी वुंड जब हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, डर्ट हो गया, डस्ट हो गया, कोई भी ऐसी चीज है, उसको सबसे पहले क्लीन कर. क्लीन कैसे करना है? सबसे सिंपल तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? वाटर से क्लीन करना है. वाटर से क्लीन करना है.
बहुत बार हम लोग उसमें डिटॉल यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है, इन्फेक्शन को रोकता है. सो दीज आर द सिंपल फर्स्ट एड इन केस ऑफ वुंड. Number fourth is incision. Number fourth is incision. What is incision? Incision is a clean cut. देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंपल सा मान लो फॉर एग्जांपल कि नाइफ से पूरा स्किन कट गया, so that is a clean cut. These wounds are usually caused by a sharp object. These wounds are usually caused by a sharp object such as broken glass or knife. If the wound is deep, if that wound is deep, it could provide complications such as severe tendons or blood vessels. These wounds tend to bleed freely and may even gape open. So prevent infection is the solution. Simple सी बात है, सारा कट सारा वुंड एक ही तरह का है, सब में कहानी सिंपल है. अगर मैं आपको समरी बताऊं, नंबर 1, क्लीन द वुंड. क्लीन करना है ताकि डस्ट और पार्टिकल निकल जाए. दूसरा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकना है. बस यही सोल्यूशन होता है. इसके अलावा डिटॉल यूज करते हैं, कभी कभार एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं, बट दीज आर द सिंपल बेसिक एड इन केस ऑफ वुंड. अब बहुत ही कॉमन भी है, आपको पता ही है, आप कुछ काम करते रहते हो कि छोटा मोटा हाथ कट जाता है, तो भी आप भी क्या करते हो, आप भी करते हो, पानी से धो लिया, कुछ दवाई लगा लिया, और इनफैक्ट 2 दिन में 3 दिन में वो ठीक भी हो जाता है. 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है. Okay, there is one more kind of wound and that is called puncture. Puncture is a stab wound. आप puncture मतलब समझ रहे हो, कोई मान लो कील है, if there is some nail and that enters into the skin, अगर स्किन के अंदर घुस गया पूरा, जो कि आपको डायग्राम में देखो दिख रहा है. Okay, so that is called puncture. So these wounds can be caused by such implements as a nail or actually being stabbed. आपको ठीक है, अगर नेल से भी हो सकता है, या किसी ने मान लो सही में चाकू मार दिया, नेल मार दिया, लड़ाई के कारण हो सकता है. ठीक है. The wound is likely to be a deep but may appear to be small in diameter. आपको पता है, ये वुंड दिखेगा क्या, नहीं तो बहुत ही छोटा सा, बस एक नेल अंदर गया हुआ है, but that wound is very deep, क्योंकि वो बहुत अंदर तक गया हुआ है. And that is why damage may also be deep. इस केस में डैमेज ही बहुत ज्यादा हो सकता है. Hitting underlying organs, क्योंकि उसके अंदर मान लो organs है, so that organ may also get affected. For example, lung and heart, and may cause severe internal bleeding. So that is why this puncture is very very dangerous. क्योंकि वो सिर्फ ऊपर का स्किन नहीं, वो अंदर तक चला गया है, और अंदर का भी कोई मान लो ऑर्गन होगा, दैट ऑर्गन will also get affected. So this is a fifth kind of wound which is called puncture. What is the treatment? आपको पता है, this is the most dangerous, so treatment भी यहाँ पे ज्यादा अच्छे से करना होगा. First of all, call ambulance. Okay. If you suspect the wound have penetrated deep enough to damage any organ or cause internal bleeding नहीं होना चाहिए अंदर का. अगर organ damage हुआ है, so that treatment will be required. If the object is embedded in the puncture, do not remove it, as it may be stemming the bleed, and removal may cause further damage. ऐसा नहीं होना चाहिए. This is very very important. अगर मान लो किसी के पैर में नेल चला गया है और यहाँ इधर से उधर पार हो गया, तो खुद से निकालने की कोशिश नहीं करनी है, उसको डॉक्टर को ही निकालने देना है, बहुत केयरफुली निकालना होगा, अदरवाइज वो क्या कर सकता है, और डैमेज क्रिएट कर सकता है. ऐसा नहीं किसी को सबसे पहले क्या करता है कि इसका जो नेल है नेल ही खींच लेते हैं. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको नहीं करना है, वो डॉक्टर को करना है. दैट इज वेरी स्पेसिफिक, दैट इज नॉट फर्स्ट एड. Okay, this is the question. Read the question and try to answer it. The first aid that is to be given to a victim who has an object impaled in hand is: remove the object, flush with cool water and transport to hospital, immobilize the object by placing several dressing around it, break object off where it sticks out and bandage injury. Any of the above? None of the above. Okay, this question has also been asked by DGMS. And it is great to see that most of you people have answered B. So B is the correct answer. That जो भी object अंदर गया, मैं आपको क्या बताया? What I already told you? I already told you that the object, you should not remove the object because it may cause further injury and damage. So that is why first of all you have to do is to immobilize the object. मतलब वो ऑब्जेक्ट हिलना डुलना बंद कर दे. जो भी चीज अंदर गया हुआ है ना स्किन के अंदर, उसको वहीं पे फिक्स करना है. Why placing several dressings around it? क्योंकि that object should not be touched. That object should not be removed by yourself, because that is not the first aid. That is the medical aid. Okay, first aid और medical aid में difference है. Medical is very specific. First aid is very generic. Okay, this is the next question. If a victim has serious internal bleeding suspected, what is the first thing to do? Apply heat to the injured area, elevate suspected area and call for ambulance, place the victim in a sitting position,
Give fluids to replace blood loss. Go on pressing the stomach. So nice to see that most of you people have answered B, which is the correct answer for this question. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आपको आया पहली बार, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ट्राई टू लिसन हियर, ट्राई टू लिसन हियर. अप्लाई हीट टू द इंजर्ड एरिया. भाई ऐसा कभी होता है क्या? अगर कोई इंजर्ड एरिया है उसके ऊपर आपको हीट अप्लाई करना है, कभी भी आपने पढ़ा है? कहीं भी नहीं पढ़ा है. ठीक है, अभी मैं 2-3 को छोड़ता हूं. गिव फ्लूइड टू रिप्लेस ब्लड लॉस, ऐसा होता है क्या? If there is blood loss and you drink water, then your blood will be replicated. Does that happen? Never happens. तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. Go on pressing the stomach. भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ भी हुआ और आपने गया, आप गए और क्या करना लग स्टार्ट कर दिया, आपने स्टमक प्रेस करना स्टार्ट कर दिया. कभी ऐसा होता है? आज तक कभी हमने पढ़ा फर्स्ट एड में या कहीं भी? नो. तो मतलब 2 ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है. बाकी सारे ऑप्शन तो इतने मतलब इतने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन के लिए कि आपको तो कभी सोचना ही नहीं था. So, because I have already told you that elimination of options is also very important in MCQ exam. Okay? So, A cannot be the answer, D cannot be the answer, E cannot be the answer. So, either B or C will be the answer. Now, read both the question. Elevate suspected area and call for ambulance. Place the victim in a sitting position. Sitting position में कभी किसी victim को नहीं बैठाया जाता है. उसको क्या करना होता है? Lay down करना होता है. आज तक कभी आपने देखा है कुछ हुआ और आप उसे सिटिंग पोजीशन में बैठा दो? कभी नहीं. उसे हमेशा ले डाउन करना है, उसे हमेशा काम करना है. लेट हिम रेस्ट, लेट हिम काम. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज बी. एंड इन फैक्ट ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, बट आई वाज टेलिंग यू द ट्रिक, आई वाज टेलिंग यू द वे हाउ टू डील these new questions. Okay, this is the next question. Read the question and try to answer it. What would you do if a victim had a body part torn or cut off? Wrap severed body part in a sterile gauze. Body part to be placed in a plastic bag. Put the body part in plastic bag on ice and take it to the hospital with victim. Okay, this is and all of the above, A or C. So this question was also asked by DGMS and answer for this question was D. देखो आपको मैंने क्या बताया था, कितनी बार बता चुका हूं ना. एंड यू प्लीज रिमेंबर दैट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दैट टिप, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. मैं आपको बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप सही करते होगे सिर्फ इस ट्रिक से, कि अगर आपको मैनेजमेंट एंड जनरल सेफ्टी सिर्फ 2 पार्ट, नॉट इन लेजिस्लेशन. हालांकि लेजिस्लेशन में भी अगर ऑल ऑफ दीज दिख गया, वहां पे ज्यादा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होंगे नहीं, बट अगर लेजिस्लेशन में भी ऑल ऑफ दीज दिख गया तब भी आपको अगर नहीं आ रहा है आंसर, देन यू शुड ट्राई टू टिक डी. But in management and general safety, if you tick all of the above, minimum 8 out of 10 times you will be correct. Okay, and this is very important tip, which will definitely increase your marks by 5-10 marks, जो कि आपको पता है बहुत ज्यादा क्रूशियल है पास करने के लिए काफी. Okay, so answer for this question was all of the above, because all of the above was one answer. Now read this question and try to answer it. When caring for a victim who has a large burn on his forearm, these are the options. Use large amount of cool water to cool the burn. Use ice or ice water to cool the burn. Remove any cloth that has stuck to the burn and apply burn cream. All of the above, none of the options. Sorry. So answer for this question is A. Large burn on forearm. So in case of burn, I've already told you that you have to use water. Burn के केस में, wound के केस में, अच्छा burn अभी और हम थोड़ा पढ़ेंगे अभी. So burn and in wound case and in burn case you have to use water. Okay, अब यहाँ पे all of these आप चाहते हैं टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने क्या बोला आपको, out of 10 questions 8 will be correct, 2 might be wrong. तो 2 गलत हो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 2 गलत, अगर आपको नहीं आ रहा है एग्जैक्ट आंसर तो ऑल ऑफ दीज टिक करके आ दो, फिर भी मैं बता रहा हूँ 90% चांस होगा सही होने. Okay, but for this question, this is the official answer, and for this question, answer is A. That is, use large amount of cool water to cool the burn. Cool the burn. Okay.
बट डेफिनेटली आई विल टेल यू कि अगर आपको नहीं आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव टिक करके आइए, दैट विल स्टिल हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A victim is coughing up blood with bleeding from the mouth and is tender in abdomen. Pulse is weak and rapid. The victim is having sign of massive head injuries, internal bleeding, drug overdose, possible poisoning, heart attack. Okay. Answer for this question is B. मतलब कि internal bleeding हो रही है. Internal bleeding हो रही है. Because he is coughing up blood with bleeding from the mouth. तो जैसे ही ब्लड हो रहा है तो इसका मतलब है कि the problem will be related to bleeding. The problem will be related to bleeding. And bleeding को लेकर के there is only one option which is internal bleeding. So internal bleeding will be the answer for this question. Okay. Move on to the next question. This is question number 41. Read this, read it, and try to answer it. You have tried to control a victim's bleeding with direct pressure and elevation, but the bleeding does not stop. Where would you apply pressure to slow the flow of blood to a wound on the forearm? Okay, so these are the options. Read the question and try to answer it. Outside the arm, midway between the shoulder and the elbow, on the inside of the elbow, inside the arm between the shoulder and the elbow, any of the above will slow the blood on the floor. None of the options. So answer for this question is C. Answer for this question is C. Inside the arm between the shoulder and the elbow. Okay, and in fact, most of you have answered it correctly also. This is the next question. Hard board stretcher is required to shift an injured person in case of hard board stretcher. Hard board stretcher is required to shift an injured person in case of head injury, multiple fracture, spinal cord injury, A and B, none of the options. Okay. So all of you have answered C, and which is the correct answer for this question. Spinal cord injury. Okay. Spinal cord injury. Because hard board stretcher, spinal cord injury आप समझ रहे हो? This is very very dangerous. मतलब यहाँ पे survival is very difficult क्योंकि this is related to nervous system, directly brain. Okay, this is the next question. A victim has lost a lot of blood through the deep cut in his neck. He is breathing fast and seems tall and restless. He is probably having a stroke, having a heart attack, in shock, choking, in nervous state. Okay, so these are the options, and most of you people are answering C for this question. Let me see. So answer for this question is C only. He is in shock. He is in shock. He is in shock. Okay. Let's move ahead. Next question. The body system that includes the heart, blood vessel, and blood is known as respiratory system, circulatory system, musculoskeletal system, nervous system, and none of these options. What all the things are included? Heart is included, blood vessels are included, and blood is included. Okay. So nice to see that most of you people are answering B, and B is the correct answer for this question. Okay, that is called circulatory system. That is called circulatory system. Correct. All of you have answered B only. Come to the next topic, which is nosebleed. ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी. जो मेजर काम क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा. नोज ब्लीड्स आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ वीकेंड और ड्राइड आउट नोज ब्लड टिश्यूज इन द नोज. ठीक है, इन द नोज. अगर ब्लड टिश्यू ड्राई हो गया या डैमेज हो गया तो नोज ब्लीड हो सकता है. ए नोज ब्लीड कैन बी ट्रिगर्ड बाय ए बैंग टू द नोज, पिकिंग और ब्लोइंग इट. किसी ने अगर नोज पे मान लो एक घूसा मार दिया, खुद से जाके आप किसी चीज से टकरा गए और नोज के ऊपर चोट लग गया,
Okay, so that may be the reason for nosebleed. However, it can be a symptom of more serious problem also. लेकिन हो सकता है कि nosebleed सिर्फ वो एक small incident नहीं है जहाँ पे आपको nose में चोट लग गया. This may be a reason of some serious problem like very high blood pressure or fractured skull. हो सकता है कि नोज ब्लीड जो है वो सिर्फ एक थोड़े से चोट के कारण नहीं है. आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या विक्टिम का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या स्कल इज फ्रैक्चर्ड. Okay, so that the nosebleed may be the reason of some serious problem also. But in general, जब पता है कि किसी ने लड़ाई करने के दौरान किसी ने घूसा मार दिया या कोई आदमी गिर गया जिसके कारण चोट लग गई, तो पता है कि ये इस चोट के कारण है. Okay, have the casualty sit with their head tipped forward to allow the bleed to drain. Okay, सबसे important, this is the most important line in case of nosebleed. हेड को आगे की तरफ रखना है. हेड टिप्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ हेड को रखना है ताकि जो भी नोज के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड धीरे धीरे क्या हो जाए, बाहर आ जाए. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूं, हेड टिप्ड फॉरवर्ड, आगे की तरफ हेड को झुका के रखना है. जेंटली पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज एंड मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर फॉर 10 मिनट्स. ठीक है. टेल द कैजुअलिटी टू ब्रीथ थ्रू माउथ. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नोज ब्लीड हो रहा है ना, तो कैजुअलिटी को ये बोलना है कि दैट यू ब्रीथ थ्रू द माउथ नॉट थ्रू द नोज, बिकॉज इन दैट केस ब्लड में इंटर इनसाइड द नोज ऑल्सो. और आपको पता है कि इन द हेड एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ओके, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नंबर वन, हेड शुड बी टिप्ड फॉरवर्ड. नंबर टू, दैट कैजुअलिटी शुड ब्रीथ फ्रॉम द माउथ एंड नॉट फ्रॉम द नोज, क्योंकि नोज में तो ब्लीडिंग हो रही है. गिव द कैजुअलिटी सम टिश्यू और a cloth to clean up the blood while you maintain pressure on soft part of the nose. Okay, soft part of थोड़ा सा नोज के ऊपर प्रेशर मेंटेन करना है. राइट, आगे की तरफ हेड बेंड कर देना है और कहां से नोज ब्रीथ करना है, ब्रीथ करना है माउथ. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ नोज ब्लीड. वंस द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, एक बार जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, recommend to the casualty that they try to continue breathing through their mouth and not blow their nose for the next couple of hours as they meant to hear. सिंपल सी बात है कि एक बार अगर ब्लीडिंग रुक भी जाए ना, देन तब भी उस आदमी को ये बोलना है कि आप अपने माउथ से ही 1-2 घंटे के लिए सांस लें. हो सकता है फिर से प्रेशर पड़े, वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए. ओके, तो वही चीज का कंटिन्यूएशन जो लास्ट में हमने बताया कि माउथ के थ्रू ब्रीथ करना है, दैट इज अ कंटिन्यूएशन. सेम, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सेम थिंग. However, if bleeding continues for more than 30 minutes, हो सकता है कंटिन्यू करता रहे. और they take an anticoagulant drug, for example warfarin. Anticoagulant मतलब जो ब्लड को क्या करे, इकट्ठा ना होने दे, मतलब क्लॉटिंग ना होने दे. Get them to hospital, ensuring they stay in an upright position. तब उस केस में क्या, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट एड से काम नहीं चल रहा है. If the casualty is a history of frequent blood nose, recommend they visit their doctor to determine. अगर मान लो बार बार किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, एक सप्ताह में नोज ब्लीड हो रहा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि नोज ब्लीड मे बी द रीजन ऑफ सम सीरियस प्रॉब्लम आल्सो. सो इन दैट केस you have to suggest the victim to go to the doctor and have their treatment. Okay, this is the question. Read the question and try to answer it. When caring for a victim with a bloody nose, means nose blood, one should not apply an ice pack to the bridge of the nose. Apply pressure to upper lip, just beneath the nose. Make the victim sit with head tilted slightly backward while closing the nostrils together. प्रॉब्लम ना हो.
Just wait a minute. आवाज आ रही है मेरी? am I audible now? Okay. और आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, राइट? और मैंने उस आदमी को भी रोक दिया है. ओके, सो करेक्ट. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था ना. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? प्लीज ट्राई टू आंसर इट. अभी आपको just I have already told you, just now I've told you that कि आपको क्या करना है, पीछे ले जाना है. आपको आपको आगे रखना है हेड को, ठीक है ना? तो स्लाइटली बैकवर्ड जो लिखा हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग. स्लाइटली बैकवर्ड जो लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग. ओके, दैट इज व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज C. Okay, because I already told you, that you have to keep your head slightly tilted forward, not backward, because in case of backward, that blood may enter some other part of the head. हो सकता है कि कहीं ब्रेन की तरफ चला जाए या इस तरह की प्रॉब्लम नहीं करनी है. So that is why answer is C. Answer is C. This is the next question. Read the question, try to answer it. Internal bleeding can be caused by trauma or injury, illness, medication, all of the above, none of the above. So in this case, I have already told you that जहां भी all of these दिखे, जरूर टिक करो. Out of 10 times, 8 times possibility है that you will be correct, and 2 times you may be incorrect. But let's see. And for this question, answer is D. So ये तो आपको मेरी तरफ से एक ट्रिक समझो कि एग्जाम में आपको all of these हर क्वेश्चन में टिक करके आना. एक आध क्वेश्चन जिसका एग्जैक्ट आंसर कुछ और हो, आपको पता हो, तो आप टिक कीजिए. अदरवाइज तो आप all of these को टिक करके जरूर आना. And don't miss that question. Don't leave that question unattended. वो ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को बनाए ही नहीं, बिना बनाए चले आ गए. ऐसा कभी मत करना. Okay, this is very very important. Okay, so this is a small slide regarding burns. Burns के बारे में आपको पता है. यहाँ से थोड़ा सा पहले मैं आगे चला जाता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ. Okay, so these are the burns. See, these are 4 different stages of burns. बहुत ही छोटा सा स्मॉल है, और थोड़ा बड़ा हो गया, और थोड़ा बड़ा हो गया, और भी ज्यादा बड़ा हो गया. इन सब के लिए these are the solution. Suppose there is a simple burn, so hold under the cold water. देख रहे हो आप? देखो. If the burn is little bit serious, no, this is not first degree, second degree. हाँ है तो ये first degree, second degree, but वो slide भी आगे है. So that I'll tell you. Okay, so this is the means little bit severe. So bandage, you have to use the bandage. Third one, you have to use the ice, and the fourth one, you have to consult the doctor. You have to consult the doctor. What I'm telling you, these are the 4 different stages. These are the 4 different stages of burn. जहां पर कि थोड़ा स्मॉल से लेकर के सीवियर तक है. ओके, थोड़ा स्मॉल से लेकर के सीवियर तक है. ओके, दिस स्लाइड इज वेरी इजी. यू कैन रीड दिस स्लाइड. थोड़ा सा जवाब अभी वेट कर लीजिए. दिस स्लाइड this is easy. You can read the slide. Size. The larger the size of the burn, the more severe it will be. आपको पता है. Cows आपको हो सकता है burn का कुछ भी हो सकता है. Example, electrical burns. There can be electrical burns, or there can be due to some chemical, या हो सकता है खाना बनाते हुए या फायर के कारण हो सकता है. एज आपको पता है कि different एज के लिए casualty will be different. Okay, so casualty age will affect the severity of the burn and how long their recovery rate will be. ठीक है ना? लोकेशन पता है कि कहीं भी हो सकता है. Depth, the deeper the burn, the more severe it is going to be. आपको पता है कि burn is severe, burn is deep, then that will be more dangerous. That will be more dangerous. So this slide is very common slide. Now read this question and try to answer it. Why should we cover burns with a clean or sterile dressing? To prevent infection, to cool burned area,
to keep the one area warm, both 1 and 3, both 2 and 3. Answer for this question is A only. Answer for this question is A only, means to prevent infection. To prevent infection. वुंड के केस में भी आपको बताया था ना, याद करो, वुंड के केस में आपको क्या बताया था? सबसे पहले वॉश करना है. वॉश क्यों करना है? ताकि डर्ट ना बचे, ताकि डस्ट ना बचे या इन्फेक्शन ना हो. So that is why burn के केस में भी first of all you have to clean the burn. You have to clean the burn or you have to do sterile dressing. Sterile मतलब इन्फेक्शन से जो बचाता हो, जो इन्फेक्शन से बचाता हो. करेक्ट? Okay, someone was asking regarding first degree, second degree, third degree burn. So this is the first degree, second degree, and third degree burn, and exactly the same slide which I was referring to 1, 2, 3, 4. So that and this slide is common. What is first degree, second degree, third degree burn? Depending upon कि burn की quantity कितनी. First degree burn is superficial burn that only affect the skin surface. जो सबसे ऊपर के skin को burn करे, that is first degree burn. What is second degree burn? Burns that affect the outermost and second layer of skin. ठीक है, ऊपर का स्किन भी जल गया और उसके नीचे का स्किन भी जल गया, so that is second degree burn. What is third degree burn? Burn that have killed the skin all the way to the fatty tissues. मतलब बहुत अंदर तक उस बर्न ने क्या किया, स्किन को बर्न कर दिया. So this is first degree burn, this is second degree burn, and this is third degree burn, depending upon कि बर्न कितना ज्यादा सीवियर है. So if that is less severe, it is first degree. If that is more severe, then that is third degree burn. And it will be more dangerous. Of course, third degree burn will be more dangerous. What you have to do? You have to consult the doctor. फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री तक के लिए तो आप फर्स्ट एड दे सकते हो, बट थर्ड डिग्री या उसके और भी ज्यादा एक्सेस बर्न है तो उस केस में फर्स्ट एड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ क्वेश्चन has been asked by DGMS only. The first degree burn dash involves only the top layer of the skin, is red and blistered, destroy all layer of skin, is the most serious of burns, most rare. So already told you that in first degree burn, it is a basic first, only the upper layer of the skin is burned. So the answer for this question is of course A, means first degree burn involves only the top layer of the skin. Only the top layer of the skin. Okay, so that is it for the first aid. We have studied almost every topic of the first aid. Regarding first aid मैं कुछ आपको बता दूं, हो सकता है कि फर्स्ट एड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको नहीं पता हो, क्योंकि फर्स्ट एड का टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट क्या बोलूं, मतलब बहुत ज्यादा रैंडम है. बट इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं अगर मान लो कि, हालांकि मुझे लगता है कि दिस ईयर there should be the less question on first aid. Last year the questions numbers were more, but this year there will be few questions from first aid. So at least with this level of understanding you will definitely, suppose आप मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो 6-7 में कम से कम 3 या 4 तो आप डेफिनेटली करके आओगे, सही करके आओगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बाकी 2 क्वेश्चन के लिए अगर आपको नहीं भी आता है तो नो नीड टू पैनिक. अल्टीमेटली आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आपको कितने टोटल सही करने हैं, मतलब कितने मार्क्स लाने हैं, 50% मार्क्स लेके आने हैं ना. सो दैट इज बाय कुछ क्वेश्चन अगर आपको गलत या नहीं आता है तो आपको पैनिक एकदम नहीं करना है. मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ, ऑल ऑफ यू पीपल who have been with us for last 3-4 months are most well prepared and you have the highest chances of getting success in the exam. बाकी सारे लोग of course पास करेंगे, पास नहीं करेंगे, but you people have the highest chances of passing the exam. Okay, there will be one class on tips and strategies, most probably 3 बजे या 4 बजे. तो वहां पे हम लोग वापस मिलते हैं. कुछ चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो हमने बार बार पढ़ाने के दौरान भी आपको बताया है, एक जगह पे इकट्ठा करके, प्लस एग्जाम का मार्किंग पैटर्न क्या है, क्या इस बार एक्सपेक्टेड है, प्लस आपको क्या चीज ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, फिजिकली मेंटली आपको कैसे एग्जाम के लिए तैयार रहना है, ये सारी चीजों के बारे में वी शैल डिस्कस देयर. ओके, सो टिल नाउ द टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड इज कंप्लीट एंड ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीट. देखो कभी भी 100% कोर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, but still we have covered the most important part. Okay, so you should be confident and you should be like you are well prepared. आराम से एग्जाम के लिए जाइए, एग्जाम देके आइए,
डरना नहीं है, डर के आगे जीत। बस एक ही लाइन है, ठीक है, डर के आगे जीत है। हर आदमी को जो टॉप भी करता है ना एग्जाम को, एग्जाम के पहले उसको डर लगता रहता है, पता है आपको? ऐसा कोई नहीं होता ना दुनिया में, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि मैं इस एग्जाम को तो पास कर ही जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं है। बट स्टिल पीपल टॉप द एग्जाम। ऐसे लोग होते हैं जो एग्जाम को टॉप कर जाते हैं, एग्जाम के पहले वो भी बोलेगा कि पता नहीं मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम, मतलब ये सिर्फ आपके साथ सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन सबके साथ होता है। चाहे वो टॉप करने वाला हो, चाहे वो फेल करने वाला हो, चाहे वो पास करने वाला हो, राइट? सो यू ऑल आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ज्यादा डरने वरने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसा है ना कि पता है आप ना 150 नंबर में ना 120 नंबर, 130 नंबर, यू पीपल आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग 120, 130। और अभी आप बोल रहे हो कि सर मुझे डर लग रहा है एग्जाम कैसे देना। अरे आपको 120 नंबर आएगा, मुझसे आप लिखवा लो 110, 120। यू पीपल आर बेस्ट प्रिपेयर्ड। डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को शांत रखना है, काम। थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, मेडिकेशन की तरफ चले जाओ, मेडिटेशन की तरफ चले जाओ। 1-2 दिन तक ना आराम करो, आराम से सो जाओ, आराम से रिलैक्स करो। 1-2 दिन में देखो कुछ नहीं हो सकता है ना? जिसने कुछ नहीं पढ़ा हो वो पास नहीं हो सकता, और जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया हो वो फेल भी नहीं हो सकता 2 दिन के अंदर। करेक्ट? तो आप सेकंड वाली कैटेगरी में हैं, जहां पे आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलूंगा, आराम से 2 दिन 3 दिन जो भी एग्जाम के दिन बचे हुए हैं, बहुत ही कूलली, कामनेस के साथ गुजार देना है। कुछ ज्यादा इधर उधर लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या बना रहा है, कौन क्या नहीं बना रहा है। सारी चीजें, काम की चीजें ना हमने पढ़ ली है, और कचरा चीजें दुनिया में ना बहुत कुछ होता है। ठीक है, डर के आगे जीत है। ऑल द बेस्ट, आराम से एग्जाम जाइए। उसके बाद ऑफकोर्स हम लोग ग्रुप में तो बात करते ही रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।